तो यहाँ पे रेत, हमने रेत डाल दी है। आप इसको रेत को देखो, ये रेत है पूरी। एंड अब ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग करेगा। अब ये ऑटोमेटिक क्लीनिंग कर रहा है इसका। आपको ह्यूमन रिसोर्स को ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है ऑटोमेटिक क्लीनिंग के लिए। एंड ये सारी रेत को यहाँ पे इकट्ठा कर देता है। तो एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल्स विल नॉट रिड्यूस, बट physically you have to get it clean. Workers are required because physically you have to get it clean from here. But efficiency for I think so इतना डस्ट तो होता नहीं होगा, पर जितना डस्ट होता है उतना क्लीन करके रख देगा वो। ओके, you are from which company? You are from which company? Santi Solar. And it is based in China? Yeah, in China. Okay. So which all countries you are exporting? Sorry? Which countries you are exporting? A lot of countries. Our main market is in Asia. Okay. And Latin America. Okay. Also Africa. Yeah, these countries. So you have exported this product? A lot. Yeah. A lot. Yeah, in Saudi Arabia, in Middle East countries. And what's the name of your company? What's the what? What's the name? Santi Solar. It is Santi Solar. Santi Solar. That's our brand. And our company name is Yantai Shutai. Okay. The strongest and the brightest solar still lighting in the world. Okay. In Thailand. Okay. Oh, wonderful. So this is a Thailand-based company. Yes. What is this for? What is this? This is for the hot and cold storage, hot and cold water pipes, for the air conditioning, HVAC industry. And we have the aero roof for the roofing. So this is you can install it on the rooftops. ये थाईलैंड बेस्ड कंपनी है एरोफ्लेक्स, और मलेशिया में इसका एग्जीबिशन देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे अगर आपको सो हमारी इसाक झिंगियानी से बात हो रही है, और ये फैक्ट्री आपकी है क्या? नहीं, हम लोग काम करते हैं एक्चुअली। हमारा बॉस है थाई चाइनीज। अच्छा। और ऑलरेडी अबाउट 45 इयर्स हो चुके हैं इन दिस इंडस्ट्री। हाँ हाँ। सो वी आर सप्लाइंग वर्ल्ड वाइड एंड या एक्सीलेंट। तो थाईलैंड में आपको कोई भी बिज़नेस करना है और ये प्रोडक्ट आपको पसंद है, तो मैं इसाक झिंगियानी का नंबर डाल दूंगा इसमें, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए जो ट्रांसमिशन टावर के ऊपर है ना, उसमें ट्रांसमिशन के टावर के टॉप पे लाइट लगाई जाती है। तो ये इस तरह की लाइट लगती है एयरक्राफ्ट सेफ्टी के लिए। तो मैं यहाँ पे एविलाइट SDN DHD ये कंपनी में आया हूँ, और ये वो वाली लाइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो विथ मी इज़ अ पर्सन। व्हाट इज़ योर नेम? Razi. Razi. Yeah. Razi, what I see is that you have also helped in lighting of KL Tower, some small part. Yeah. That is also for aircraft safety. Yes, exactly. And is there what kind of transmission towers is mandatory that aircraft safety light should be there? Any transmission line, any high voltage transmission tower require the aviation light. Okay. Especially those nearby the airport area, they require the same lighting. So every transmission tower should have that aircraft safety mechanism available. They have some sort of calculation every alternates that we need to put. It's not exactly every towers, but they will have calculations. Alternate numbers of the towers might require. Okay. So you give a gap of few towers. Yes. And is there any standard? Are you aware of any standard? Yeah, they have international standards. They have the regulations about that. Okay. And since when your company is working in this area? It's more than 20 years, since 2004. And where is the manufacturing? In Malaysia, in the east part of Malaysia, Kuala Terengganu. And it serves only Malaysia, or it serves we do export as well. We do overseas markets, mostly ASEAN countries and some Middle East countries as well. So you are exporting to which all countries? ASEAN?
and Middle East, Yeah, ASEAN's, Middle East, domestics. domestic. But this is very important for safety of all of us when we fly actually. Yes, correct. Okay. So thank you so much for the information. एक यहाँ पे अनोखी कंपनी मिली है, मैप्स एंड ग्लोबल स्पेशलिस्ट, और यहाँ पे ये दे रहे हैं फ्री मैप्स. तो ये इन्होंने लगा रखा है फ्री मैप्स का, और इसमें इनका जो मॉडल है कि भाई जिसको भी मैप्स चाहिए वो तो ये फ्री में दे देंगे. तो लार्ज स्केल सोलर मैप ऑफ मलेशिया, फिर सोलर एनर्जी स्टोरेज साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे मैप्स आपके पास अवेलेबल हैं. और इनका बिजनेस मॉडल ये होता है कि भाई जिन कंपनीज को अपना एडवर्टाइजमेंट करना है वो यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकती हैं इनके मैप्स में, पर ये मैप्स फ्री प्रोवाइड करेंगे. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. So we have one of the largest manufacturer in Malaysia. Yeah, in what sort of project? What is your name? This is my card, Serena. You can Okay. give it. So we have Serena here. Serena, what does this company do? What's the company do? This company actually supply cable containment, and we actually lately got the World Cup stadium that we supply, the biggest stadium and the portable, and then we managed to get 3 stadium. Oh, Yeah, for That's the FIFA World Cup. so in Malaysia, which is your largest project? Or maybe 2-3 projects? Coming, yeah, there are more coming, because now they are looking into the Dubai, Qatar, the oil plant in the offshore. So this is what the latest we have lah. So you are exporting now. Now you will work in Dubai and Qatar also. Yes, probably you can want to have a word with my boss. Maybe she can. Okay.